Bismillahirrahmanirrahim. Next chapter is about the thermochemistry. Now, first of all, introduction. What is meant by thermochemistry? As from the name indicates, that term mean temperature and chemistry mean branch of science. Means simply it can be defined as branch of chemistry that deals with the study of heat of reaction. Now, heat of reaction. Heat is actually energy. Energy changes when new bonds are formed and old bonds are broken down. Now, this energy change may be in the form of positive or negative. Positive mean that the chemical reaction they are belonging from endothermic reactions, and negative mean that the reactions they are belonging from the exothermic. And remember that energy or heat can easily be measured either in terms of the joule or kilojoule. For example, Haber process, nitrogen plus 3 moles of hydrogen forming the ammonia molecule. Now, this chemical reaction is belonging from the exothermic nature, while the formation of hydrogen iodide from the hydrogen and iodine molecule that is belong from the endothermic nature. मीन के ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें आप एनर्जी चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ख्वाह वो आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस फील्ड को, उस ब्रांच को आप थर्मोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं. Before discussing the first law of thermodynamics, we must have some basic information about the few terminologies. First terminology is about the system. System. What is system? Anything which is under the strict observation. While surrounding can be defined as everything in the universe which is not a part of system. Mean, let's suppose कि अगर आपके पास बीकर है और उसमें आपने कोई नॉन कंसनट्रेशन ली हुई है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की. चूँकि अब आपने सोडियम क्लोराइड के करेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या है? दैट इज़ अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, मीन दैट इट इज़ system, while the beaker, the air surrounding, and the table that constitutes simply the surrounding. Third term is state. State can be defined as properties which describe the system completely. Means system वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपकी strict observation होती है, और अगर उसी system को आप completely किसी property से explain करें तो उसको आप state का नाम देंगे. For example, कि आपने कोई नॉन कंसनट्रेशन ली है नाइट्रोजन की क्लोज कंटेनर में. अब यहाँ पर नाइट्रोजन आपके लिए क्या है? दैट इज़ सिस्टम. और ये कंटेनर या जो एयर है ये आपके लिए क्या है? सराउंडिंग. अगर आप इसी नाइट्रोजन का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मेंशन करें, मीन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटीएम एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब, तो ये कंडीशंस, ये पैरामीटर्स आपके लिए क्या हो जाएंगे? सिंपली स्टेट. नेक्स्ट वन इज़ द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शंस को आप स्टेट वेरिएबल्स का भी नाम दे सकते हैं, एंड दे कैन बी डिफाइंड एज properties that completely depends upon the state of system. Remember, internal energy, enthalpy और force क्या है? These are the state function or state variables, and they are actually independent of the path followed. मीन कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते. लेट्स सपोज कि अगर आपने किसी सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका पाथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. एंड रिमेंबर, जब आपने एक पैरामीटर को स्पेसिफाई कर दिए, मीन फिक्स कर दिए, तो आप पर ये कंपल्शन है कि आपने तमाम पैरामीटर्स को फिक्स करना है. फॉर एग्जांपल, यू आर डीलिंग विद द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT. अगर बेटा आप लोगों ने प्रेशर को ATM में लिए, तो कंपल्सरी है कि आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेंगे और आप टेम्परेचर को केल्विन में मेंशन करेंगे. ये नहीं है कि प्रेशर आपने ATM में लिया है और टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन कर रहे हैं. मीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें, उनको आप स्टेट फंक्शंस का नाम देंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी इज़ इंटरनल एनर्जी. फ्रॉम द नेम इंडिकेट सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, or can also be defined as sum of translational, rotational and vibrational energies or motion. For example, अगर आपने एक बीकर में वाटर ले लिया है, तो यहाँ पर आपके पास इसका जो इनिशियल स्टेट है उसको आप, या इनिशियल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय द E1. लेट्स सपोज कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है, और कोई आपसे कहे कि इस 25 को आपने 30 डिग्री सी में कन्वर्ट करना है, तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर विगरस शेकिंग करते हैं या सिंपली हीटिंग से इस टेम्परेचर को चेंज करते हैं. ये जो न्यू आपके पास स्टेट आएगी इसको आप फाइनल स्टेट का नाम देंगे, और इसकी जो एनर्जी होगी इसको आप E2 से रिप्रेजेंट करेंगे. मीन चेंज इन एनर्जी आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? डेल E, that is final minus the initial. And remember, as we know that there is direct relationship between the temperature and kinetic energy. Increase in the temperature results in increase in the kinetic energy, and as a result of increase in kinetic energy we observe change in the phases. Mean that may be chemical reaction
takes place mean that old bonds can easily be broken down and new bonds can easily be reformed.